Tensions between Pakistan and India have escalated into the region's most serious military confrontation in decadism, with cross-border strikes, diplomatic blowback, and global concern mounting rapidly. Pakistan's National Security Committee says India has once again ignited an inferno in the region. The statement comes after Indian jets targeted 6 locations across Punjab and Azad Jammu and Kashmir in what New Delhi called Operation Sindoor. India claims the strikes hit militant camps, but Pakistan says 31 civilians, including women and children, were killed and 57 injured. एक और चीज जो कि अहम है कि ये हमला भारत का किस वक्त किया गया? ये उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान एक प्रोसेस में था जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को वो इन तमाम जगहों पे लेके जा रहा था जिनके बारे में भारत एक फॉल्स एलिगेशन लगा रहा था कि दीज आर दोस ट्रेनिंग कैंप्स, जहां से पाकिस्तान दहशतगर्दों को तरबियत दे रहा है और यहां से दहशतगर्दी कराई जा रही है। आप सबके सामने है, दुनिया के सामने है। और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना न्यूज टाइट करना शुरू किया, उनकी स्पेस कम करनी शुरू की, उनके लिए जमीन तंग करनी शुरू की, तो वो खुद अपनी फौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पे उतर आए। क्योंकि 6 और 7 की शब को जो हुआ, जो मासूम शहरियों को और बच्चों को निशाना बनाया गया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। CNN now reports that a French intelligence official has confirmed one Rafale was indeed downed, possibly the first Rafale lost in combat. French authorities are investigating. Prime Minister Shehbaz Sharif told Parliament that the Pakistan Air Force was fully prepared, intercepting the Indian operation and downing 5 jets, including 3 Rafale fighters. He said none of Pakistan's aircraft crossed into Indian airspace, but they successfully locked communications and forced India's jets to abort. 2 drones were also shot down. और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे और हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। Foreign Minister Ishaq Dar called the airstrikes choreographed, noting Pakistan exercised restraint, targeting only jets that dropped payloads. He's now briefed diplomats in Islamabad and urged the world to hold India accountable. And response framework outlined in National Security Committee statement dated 22nd of April 2025 resolutely defended the territorial integrity of Pakistan, including Azad Jammu and Kashmir, against the Indian aggression, while also bringing down 5 Indian fighter aircrafts and unmanned aerial vehicles in the process. PPP Chairman Bilawal Bhutto warned that Pakistan will respond, under its right to self-defense as per the UN Charter. You attacked our civilians. Now be ready, he said. आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी, जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। In New Delhi, the government staged a 15-minute power blackout near Parliament as part of emergency drills. Back in Pakistan, emergency protocols have been activated. Rescue 1122 services in Sindh and Khyber Pakhtunkhwa are on high alert. In Gilgit-Baltistan, hospital leaves have been cancelled, and medical supplies are being stocked. Police across Karachi and Sindh are increasing surveillance, and all leaves for officers have been revoked. The Civil Aviation Authority has reopened airspace over most cities, though some Lahore region routes remain restricted. Airlines across Asia are rerouting flights. Korean Air, China Airlines, Malaysia Airlines, and Thai Airways have all issued alerts. American Airlines cancelled a flight to Delhi and is repositioning aircraft. The PTA has blocked 16 Indian YouTube channels, 31 video links,
and over 30 websites spreading what it called anti-Pakistan propaganda. Authorities say the move is part of efforts to counter disinformation amid the crisis. Pakistan has briefed ambassadors in Islamabad and called for global accountability. Meanwhile, the Taliban government in Afghanistan, along with the UN, US, Russia, China, and European powers, have all urged restraint. UN Secretary-General Antonio Guterres said the world cannot afford a military confrontation between two nuclear states. France acknowledged India's right to self-defense but stressed the need to protect civilians. Germany, the UK, and Italy echoed similar calls, while Turkey condemned India's actions as provocative. China reaffirmed support for Pakistan and pledged to play a constructive role in defusing tensions. As the region holds its breath, Pakistan says it does not want war, but it will not tolerate attacks on its people or its sovereignty. PM Shahbaz has vowed that every drop of blood spilled by those slain in last night's airstrikes by India would be avenged. मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, हम ये अहद करते हैं कि इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का ज़रूर हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो नहत्ते इंसानों पर वार करके खुद को ताकतवर समझता है, लेकिन कल रात हमने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अपने दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है।